अस्सलाम वालेकुम जी, वकार हेयर अगेन। आप आज की वीडियो जो मैं बनाने वाला हूँ दैट इज़ बेसिकली मेरा तकरीबन ऑलमोस्ट 10 साल का या 12 साल का जो एक्सपीरियंस है, जो कि बहुत तल्ख एक्सपीरियंस है डिफरेंट मार्केट्स के साथ, उसको समराइज़ करके मैं बनाने वाला हूँ। एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल इन आवर कंट्री विल को रिलेट एंड दे विल एग्री कि जो मैं बात कर रहा हूँ वो ठीक है। दैट इज़ बेसिकली अ कंपैरिजन बिटवीन मेकिंग अ राइट चॉइसेस। मैंने आज से 10 साल पहले व्हेन आई वाज फ्रीलांसर स्लैश पार्टनर विद अ कंपनी, अपनी छोटी सी सेविंग के साथ एक इन्वेस्टमेंट की थी एक रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के अंदर। दैट टर्न्स आउट टू बी अ वेरी फ्लैशी प्रोजेक्ट। आई रिमेंबर द टाइम, आई एम नॉट गोना कोट अ नेम ऑफ दैट डेवलपर और अ प्रोजेक्ट, बट आई रिमेंबर दैट टाइम बहुत फ्लैशी एडवर्टाइजमेंट्स आया करती थी। पूरा इस्लामाबाद एक्सप्रेस हाईवे वॉज fully decorated with banners, with flyers and everything, and people were like, oh, wow, this is going to change the whole industry, this is going to change everything. And they were challenging कि वो इस तरह का lifestyle देंगे लोगों को within a span of 3 years or 4 years, which will change the mind, which will change the concept of living, luxury living in Pakistan. We are in 2024 right now. The project has not been delivered. I still chase a lot. मैं हर पारी जब जाता हूँ, आई गो एंड मीट देयर मैनेजमेंट, नथिंग इज हैपनिंग एंड आई डोंट सी एनीथिंग विल हैपन इन 10 years. What happened? They took money from me, I paid everything, zero. I mean, the statement is fully cleared, but the money has been stuck with the developer, and what they have done is they took money from us and they put it into the project जो उनको high yield दे सके. So basically मैंने उनको अपना पैसा दिया, I funded their project, उनके प्रोजेक्ट को मैंने फंड किया मेरे पैसों से। आई लॉस्ट माई मनी। उन्होंने मेरे पैसे को यूटिलाइज करके अपने प्रोजेक्ट को बिल्ड किया। दे मेक कमीशन, दे मेक गुड रिटर्न आउट ऑफ इट। उन्होंने वो अमीरों को सेल किया एंड दे मेक गुड प्रॉफिट्स। सो द होल पॉइंट ऑफ सेइंग दिस इज, आई एम नॉट अगेंस्ट अ रियल एस्टेट इंडस्ट्री, बट आई एम अगेंस्ट दिस होल कॉन्सेप्ट के जो हमारी रियल एस्टेट इंडस्ट्री है दैट इज़ अ वेरी ल्यूक्रेटिव इंडस्ट्री। नाउ दिस इज नॉट अ ल्यूक्रेटिव इंडस्ट्री एनी मोर। देयर आर टू रीजंस। वन, आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो सेफ नहीं है। आप किसी भी बड़े से बड़े डेवलपर के साथ डाल रहे हैं, आइदर दे आर नॉट मेकिंग देयर कमिटमेंट्स, दे डिले द प्रोजेक्ट बाय एक्स नंबर ऑफ ईयर्स, आपकी इन्वेस्टमेंट स्टक रहती है। एंड सेकेंडली, जिस टाइम पे आपने पैसे इन्वेस्ट किए होते हैं और जिस टाइम पे आप उसको बेचने की कोशिश कर रहे होते हैं, उस टाइम पे आपकी जो PKR, जो आपका रुपी है, वो इतना डिवैल्यू हो चुका होता है कि आप उसमें पैसे से कुछ भी नहीं कर सकते। बेसिकली जो आपकी इन्फ्लेशन और आपकी डिवैल्यूएशन का जो इम्पैक्ट है, दैट इज़ ऑल्सो इवन नॉट कवर्ड ड्यूरिंग दोज होल स्पैन ऑफ एक्स नंबर ऑफ ईयर्स। जनरली मेरे एस्टिमेट के मुताबिक एक डेवलपर कोई भी प्रोजेक्ट को डेवलप करने में 10 से 15 साल का टाइम लेता है। इफ़ दे आर सेइंग 3 to 5 years, they are bluffing on you. Never ever trust those developers. So the whole point of saying this is, if I would have make a right choice that time back in those days, जो मैंने पैसा अपना प्रॉपर्टी में स्टक किया था, इफ़ आई वुड हैव इन्वेस्टेड दोज इन द इक्विटी मार्केट्स, जो कि मेरे पास अवेयरनेस ना होने की वजह से या उस टाइम पे सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया इतना ग्रो नहीं किया था, मेरे पास अवेयरनेस नहीं थी। अगर मैंने वो उसमें रियल एस्टेट मार्केट में डाला होता, इमेजिन ब्लू चिप कंपनीज के अंदर डाला होता, गूगल का स्टॉक बैक देन बिलो 50 ट्रेड हो रहा था, आज वो 120 130 के ऊपर है। सो इमेजिन अगर मैंने उतने अमाउंट्स के स्टॉक लिए होते गूगल के, या मैंने उस टाइम पे बिटकॉइन में इन्वेस्ट किया होता, या मैंने किसी भी ब्लू चिप कंपनी में इन्वेस्ट किया था, फॉरगेट अबाउट बिटकॉइन, बिकॉज बिटकॉइन वाज अ स्पेकुलेशन, राइट? नोबडी नोज कि वो इतना बूम करेगा और वो इतना ग्रो करेगा। अगर मैंने अपनी पैसे को किसी इक्विटी मार्केट में डाला होता, आई वुड हैव मेड अ लॉट ऑफ मनी। ना कि सिर्फ मैं पैसे कमाता, बल्कि मैं मेरी इन्वेस्टमेंट थी वो भी US$ के साथ पैक्ड होती, एंड मुझे ये फियर ना होता कि मेरे मेरे जो पैसे हैं, जो मेरे पैसे की रियल वैल्यू है, वो मैं अपने पैसे की रियल वैल्यू लूज़ कर चुका हूँ। सो वेयर आई एम स्टैंडिंग टुडे करंटली इज़ दैट जो मैंने इन्वेस्टमेंट की थी 2011 में, एंड आई पेड ऑफ इन 2015, आई टुक लोन्स, I sacrificed a lot of my dreams just because of that. तो जो इन्वेस्टमेंट मैंने की थी, नाउ वी आर इन 2024, वी आर एट सम ज़ीरो पोजीशन। मैंने अभी तक उस पर कुछ भी गेन नहीं किया, इनफैक्ट मैं एक लॉस की पोजीशन के ऊपर हूँ। सो दी होल पॉइंट ऑफ सेइंग दिस इज, आई नेवर हैड दिस काइंड ऑफ अ चैनल, और आई नेवर हैड दिस काइंड ऑफ अ कोचिंग जो मैं आपको बता रहा हूँ, या जो मैं आपको गाइड कर रहा हूँ, जिस तरीके से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देर आर सो मैनी अदर एवेन्यूज। अगर आप अपना विजन को एक्सपैंड करें, अगर आप अपने थॉट प्रोसेस को एक्सपैंड करें, यू विल लर्न दोज थिंग्स, राइट? सो आज की डेट के अंदर वी आर इन 2024, जहाँ पे टेक्नोलॉजी सबका बाप है। एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी मूव टू टेक्नोलॉजी। डेटा
technology, the information which you are passing it on to someone is going to be recorded. Your each and every minute conversation, your each and every minute of data is being recorded. Whatever I am speaking right now is going to be documented, and after 20 years even, किसी को अगर इसको decode करके you know information में डालना होगा, they can do that. तो जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि आज के दौर में अगर आपके पास ये सारा knowledge base available है, then you should always think of making a right decision. And the right decision is to put your money in the market, which protects you from devaluation, number one, which protects you, your assets, and which protects you towards any false commitment, which is happening a lot in our countries. आपकी गली मोहल्ले शहर सिटी जहाँ पे भी आप रहते हैं, आप अगर आज के टाइम पे देखें कितने डेवलपर्स हैं या कितने एजेंट्स हैं या कितने लोग हैं जो आपसे मिसकम्युनिकेशन करते हैं. मिसकम्युनिकेशन तो हमारा एक नेशनल हॉबी बन चुकी है. सो मिसकम्युनिकेशन के बाद हम जैसे लोगों की जो कि एक बहुत स्ट्रगलिंग फैमिली से आते हैं, वी लॉस्ट मनी, वी हैव बीन गिवन प्रोमिसेस कि जो कभी फुलफिल नहीं होते. तो मेरे टाइम पे मेरे पास गाइडेंस नहीं थी, एंड आई हैड नो यू कैन से फिजिकल नॉलेज, आई हैड नो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस. हमें सिर्फ सिमुलेशंस की हद तक यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता था, स्टॉक मार्केट्स के साथ कैसे ट्रेड करना है. और सिमुलेशंस आपकी ज़िंदगी में कोई रोल प्ले नहीं करती जब तक आप प्रैक्टिकली किसी चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं करते. आज जो आप बुक्स में पढ़ रहे हैं, दैट इज़ वेरी गुड, दैट माइट बी अ वैल्यूएबल थिंग्स फॉर यू, लेकिन जब तक आप उसको कल जाकर इंडस्ट्री में इम्प्लीमेंट करेंगे तब तक आपको चीज़ों का आइडिया नहीं होता. मैंने बहुत हार्ड वे से ये चीज़ें सीखी हैं. अ लॉट ऑफ पीपल से कि यूनिवर्सिटीज़ नहीं होनी चाहिए, एजुकेशन सिस्टम नहीं होना चाहिए. आई एम नॉट सेइंग दैट, बट थियोरेटिकली एंड प्रैक्टिकली जो चीज़ें होती हैं, दे आर लाइक टू साइड ऑफ द स्टोरी. बहुत डिफरेंस होता है. जब तक आप किसी भी चीज़ को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, यू विल नॉट लर्न. तो प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने का तरीका यही है कि यू बिकम अ पार्ट ऑफ दैट इंडस्ट्री, you become a part of that market. Follow those people who have done it, who have lost it, who made their money, who made their livelihoods out of it. Follow those people, either me or someone else जिसको आप trust करते हैं. I'm not saying just follow me and just follow whatever story I'm trying to sell. but जिसको भी आप follow करते हैं, आप उसको follow करें and make the right choices in your life. The choices might be difficult. The choices might have different hurdles for you, but eventually you will have a fruit which is so nice to have कि जिसको आप खाएंगे तो आपको पता चलेगा कि that was the right decision. Please start looking into the trends. Please start looking into the graphs. Please start looking into the companies. Spend 30 minutes every day. एक कंपनी को पकड़ लें, एक पोर्टफोलियो को पकड़ लें. प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कंपनीज किस तरीके से काम करती हैं, मार्केट्स किस तरीके से काम करती हैं, हाउ टू आज के दौर में टेक्नोलॉजीज़ के साथ रह के कैसे पैसा कमाया जा सकता है. बी इट कोई भी डोमेन हो, आज उसको पकड़ लेंगे, आज आप राइट इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करेंगे, आई कैन बेट यू विदिन 2020 विदिन 10 years, मे बी 2034 के अंदर आप मुझे बैठ के दुआ देंगे कि किसी ने आज ये बात की थी. एंड this is a very very hard lesson which I learned, and I don't want my people to suffer. I don't want anybody who is in my shoes, who is in a shoes like I used to be back then. मैं नहीं चाहता कि वो लोग सफ़र करें, मैं नहीं चाहता कि उनके पैसे जाएं. And I'm not just making and selling stories here, please, and I will not get any benefit by telling you this, but this is something which I learned in the last and you can say 13 years. It's been 13 years since I made this mistake. It's your money, it's your decision. My responsibility is to tell you what is right or what is wrong. Eventually आपने जो करना है वो आप कीजिए, लेकिन प्लीज़ फैक्ट्स को रख के अपने माइंड को ओपन करके ये चीज़ें करें, आपको बहुत फ़ायदा होगा. इफ़ यू वुड लाइक टू नो मोर अबाउट दिस, एंड इफ़ यू वुड लाइक टू नो कि स्टॉक्स में ट्रेडिंग कैसे होती है, अपने अकाउंट्स को कैसे ओपन किया जा सकता है, डिफरेंट एस्पेक्ट जो फाइनेंशियल मार्केट्स के होते हैं, प्लीज़ स्टे इन टच, एंड इंशाल्लाह आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफ़िज़.